Hello students, it's your math teacher Shilpi. I'm back again with the next chapter of mathematics, that is chapter 2, fractions. So let us start. First of all, what are fractions? Fractions होते क्या है? You have already read about it in class 4. You are studying it from class 4. एक बार और revision कर लेते हैं. What is the definition? The number of the form a upon b. It is written in the form a upon b, where b is not equals to 0 and a, b are whole numbers. मतलब a upon b की फॉर्म में नंबर लिखा जाता है where b is not equals to 0. अब b 0 क्यों नहीं हो सकता? I have told you in chapter 1 also कि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा then it is not defined. आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, right? So and a, b are whole numbers. Then this is called a fraction. And you know very well, if a upon b is a fraction, then a is called numerator and b is called denominator. Then there are some types of fractions. Main types of fractions जो आप 4th class से पढ़ते आ रहे हो, that is proper fraction, improper fraction and mixed fractions. अब देखते हैं क्या है. Suppose you have a pizza, right? And this pizza is divided into 4 parts, right? And you are 3 friends. आप 3 friends हो. So you have taken 3 slices, 3 pieces of the pizza. Okay? So how you will represent it in the form of fraction? The number of parts you have selected. जितने parts आपने select करे या जितने parts आपने लिए, that is 3. Upon total number of parts in which the whole is divided. The whole is divided means one complete quantity is divided. तो पूरा एक complete pizza कितने parts में divided है? 4. So 3 upon 4. Now I will take another example. Again, suppose you have a pizza which is divided into 4 parts, 4 equal parts. That is a very important point कि जितने भी पार्ट्स में हम इसे डिवाइड करेंगे वो सारे पार्ट्स इक्वल होने चाहिए. अगर अनइक्वल होंगे तो फ्रैक्शंस का यहाँ कोई मतलब नहीं है. All the parts should be equal. Okay. Now suppose again you have a pizza. It is divided into 4 equal parts. Now you are 4 friends, right? So how many slices you have taken? How many parts you have taken? 4 parts. So again in the form of fraction, what will you write? Number of parts selected, जितने parts आपने select करे, that is 4 upon total number of parts in which whole is divided. यानी कि पूरा 1 pizza कितने parts में divided है? 4. तो 4 upon 4 आपको पता है ये cancel हो जाएगा. What will be left? 1 upon 1, it is equals to 1. ठीक, ये अभी हम फिर से देखते हैं. Now let us take one more example. Again you have a pizza which is divided into 4 equal parts, right? But now this time you are 5 friends. तो आपका 4 parts में तो काम चलेगा नहीं. You need one more part, है ना? भाई एक और piece चाहिए, right? So from where will you get? From another pizza. Okay. So how many parts you want? 5. 4 पार्ट्स तो ये हो गए. 1 पार्ट हमने दूसरे पिज्जा में से लिया. सो हाउ मेनी पार्ट्स यू हैव सिलेक्टेड? कितने पार्ट्स आपने लिए? 5 पार्ट्स डिवाइडेड बाय हाउ मेनी पार्ट्स द होल इज डिवाइडेड. होल मीन्स 1. अगेन आई एम रिपीटिंग. तो 1 पिज्जा आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 4 पार्ट्स में. तो इट इज 5 अपॉन 4, राइट? नाउ यहाँ पर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर छोटा है ना डिनोमिनेटर से, सो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट? अब यहाँ
यहाँ पे क्या है 4/4, यानी कि जितने टोटल पार्ट्स में डिवाइडेड था उतना पूरा का पूरा पार्ट आपने दे दिया, तो फ्रैक्शन इज 4/4. So now in this case numerator is equal to denominator, and in this case numerator is greater than denominator. तो जहां पर आपने होल मतलब पूरे पिज्जा से कम नंबर ऑफ पार्ट सेलेक्ट कर रहे हैं वहां तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, बट अगर आपने पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लिया या पूरे एक वन क्वांटिटी से भी ज्यादा पार्ट सेलेक्ट कर लिया, वन से भी आपको दूसरे पिज्जा में से वन पीस लेना पड़ा, राइट? तो इन these two cases, these two types of fractions are called improper fractions. तो ये डेफिनेशंस आप पढ़ते आ रहे हो. When numerator is less than denominator, it is called proper fraction, and when numerator is equal to denominator, or if it is greater than denominator, then these two types of fractions are called improper fractions. अब improper fractions का ही एक अदर फॉर्म है विच इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये भी आपने पढ़ा है. तो सपोज अब ये वाला केस है, इसको अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? पहली चीज मिक्स्ड फ्रैक्शन. अब देखो हाउ मेनी पार्ट्स यू हैव सिलेक्टेड 5, राइट? ये तो हो गए टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, बट अगर वैसे देखें आपने 1 पूरा पिज्जा सेलेक्ट करा है, उसके अलावा 1 पार्ट सेलेक्ट करा है, तो 1 पूरा पिज्जा दैट इज 1 होल. सो यू कैन राइट 1, ओके, 1 होल, और यहाँ पे 1 पार्ट सिलेक्ट करा है, तो 1 पार्ट सिलेक्टेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं 1 पिज्जा के? 4. सो इट इज 1 होल 1/4. ये किस में कन्वर्ट हो गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में आपने लिख दिया, राइट? सो दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन. सो अ मिक्स्ड फ्रैक्शन कंटेन 1 होल नंबर, 1 क्या है? होल है, राइट? And 1 proper fraction. इसके साथ ये 1/4 क्या है? Proper fraction. So this is called mixed fraction. Now we will see all the types of fractions. So now there are some types of fractions. First one is proper fraction. We have already discussed this. Proper fractions are those in which numerator is less than the denominator. Any example? You can write some examples like 2/3, 5/7, 9/13, etc. So in all these fractions numerator is less than denominator, so these are proper fractions. Now improper fraction. Improper fractions I told you numerator is either equal or greater than denominator. This is the sign of equal or greater than, right? So if I take any example, suppose 5/5, both numerator and denominator are equal. Suppose I take 7/5, 5/3, 5/2, etc. So here numerator is either equal to denominator or it is greater than denominator. Then these are improper fractions. Now let us come to like and unlike fractions. अब ये जो लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस है ये हम 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस के लिए ही बताते हैं. लाइक मतलब एक जैसे, अनलाइक मतलब जो एक जैसे नहीं है, राइट? सो व्हेन यू कंपेयर 2 और मोर देन 2 फ्रैक्शंस देन यू टेल अबाउट दैट दीज फ्रैक्शंस आर लाइक और अनलाइक, राइट? नाउ लाइक फ्रैक्शंस आर दोस इन व्हिच डिनोमिनेटर्स आर सेम. फॉर एग्जांपल 2/13, 3/13, 5/13, 7/13. So in all these fractions the denominator is same, right? So that's why these are like fractions. मतलब एक जैसे fractions है. Now unlike fractions. Unlike fractions is just opposite of like fractions. तो यहाँ पर क्या होगा? denominator same नहीं होंगे. So here denominators are not same. So examples, any example you can write 2/5, 5/7, 7/13. So here denominators are not same, so these fractions are unlike fractions. Now unit fractions. Unit means 1.
So those fractions in which numerator is equal to 1 are called unit fractions. So here numerator is equals to 1. So the fractions can be 1 by 2, 1 by 7, 1 by 5, 1 by 13, etc. Right? So here numerators is equal to 1. So these fractions are unit fractions. Now mixed fractions. We have already discussed mixed fraction. It is in the form of a whole number and a proper fraction. Like a whole number numerator upon denominator की form में हमारा एक proper fraction हो जाएगा, right? So any example like 2 whole 1 by 5, 3 whole 2 by 5, 13 whole 1 by 7, and so on, right? So here we have a whole number and a proper fraction. Whole number and proper fraction. These are called mixed fractions, right? Then decimal fractions. Now decimal means whenever you remove decimal point from a number, तब क्या होता है? Denominators में zeros add कर देते हो ना? Same is there in decimal fractions, right? Whenever denominator is in powers of 10, like 10, 100, 1000, 10,000, lakh, and so on. तो इस तरह के जब denominators होते हैं, then these kind of fractions are called decimal fractions. For example, 1 by 10, 7 by 100, 23 by 1000, and so on. So here denominators are in powers of 10. 10 की power में है, right? 20, 30 is not decimal fraction, right? 1 followed by any number of zeros. So these are decimal fractions. Now equivalent fractions. Equivalent fractions क्या होता है? Equivalent means कुछ equal जैसा, right? So whenever you simplify any fraction, fractions को जब हम simplify करते हैं, simplified form में लेके आते हैं, then simplified form is same. अगर simplified form सारे fractions की same आ रही, यानी कि वो सारे fractions क्या है? Equivalent, मतलब एक जैसे हैं. See how. Suppose I have a fraction 2 by 3, 4 by 6, 6 by 9, right? अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, 2 by 3 तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये और कैंसिल नहीं हो सकता. देन 4 by 6, 4 by 6 it can be written as 2 2s are 4, 2 3s are 6. Then next is 6 by 9, 2 3s are 6, sorry 3 2s are 6, 3 3s are 9. तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में सारे फ्रैक्शंस क्या आ गए? 2 by 3, 2 by 3, 2 by 3 सारे इक्वल हो गए. सो दीज टाइप ऑफ फ्रैक्शंस आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. देन नेक्स्ट इज वल्गर फ्रैक्शंस. नाउ द वल्गर फ्रैक्शंस आर दोस व्हिच आर नॉट डेसिमल फ्रैक्शन. जो डेसिमल फ्रैक्शंस नहीं है वो क्या है? वल्गर फ्रैक्शन. मतलब डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10. डिनोमिनेटर में 10 की पावर्स आपको नहीं मिलेंगी. Then these type of fractions are called vulgar fractions, right? For example, 7 by 8, 3 by 13, etc. यहाँ पे denominators क्या है? 10 की powers में नहीं है. So these are vulgar fractions. So these are the all types of fractions which we have to learn in this chapter. You can just take a screenshot by pause the video. Okay, now we will see how to compare the fractions. हम given fractions को कैसे compare करेंगे? So there are 3 cases in it. When denominators are same, जब denominators same होंगे तब कैसे compare करेंगे? Numerator same है तब कैसे compare करेंगे? And when both the numerator and denominators are different, जब denominator और numerator दोनों different है तब हम fractions को कैसे compare करेंगे? How will we tell then which one is greater and which one is smaller, right? So see, first case when denominators are same. अब ये examples देख रहे हो आप, here denominators are same, 11 11, इन दोनों में भी 8 8, 7 7. So denominators are same, right?
So whenever denominators are same, you compare the numerator. जिसका numerator ज्यादा होगा वो fraction greater होगा. The fraction which is having greater numerator is greater, right? So here अब denominator तो same है, numerator here it is 9 and here it is 7. तो कौन सा numerator बड़ा है? 9 is greater. So that means this fraction is greater. Similarly here denominators यहाँ भी same है, तो numerator देखेंगे कौन सा वाला बड़ा है? 3 and 5. 5 is greater. That means this fraction is greater. Similarly here 7 same denominator है. We will compare the numerators 2 and 5. कौन सा numerator बड़ा है? 5. That means this fraction is greater. Now next case is when numerators are same. जब numerators same होंगे तो क्या होगा? हम denominators को देख के compare करेंगे. And इस केस में उल्टा हो जाएगा. Denominator जिसका छोटा होगा that fraction will be greater. अब यहाँ पर numerator same है, 3 and 3 same numerators are there, but denominators here it is 7, here it is 5. तो अब denominator में हम ये देखेंगे कि कौन सा denominator छोटा है. So here 5 is a smaller, that means कि जो smaller denominator वाला fraction है वो greater है, right? Similarly here 7 numerator same है दोनों में, छोटा वाला denominator कौन सा है? 9. So this fraction is greater. Same here 5 and 5 same numerator है, denominator कौन सा छोटा है? 12. यानी कि this fraction is greater, right? So दोनों केस में opposite हो जाएगा. जब denominator same है तो बड़ा वाला numerator जिसका होगा वो fraction greater होगा, और जब numerator same है तो जिसका denominator छोटा होगा वो fraction greater होगा, right? So यहाँ भी greater होगा. Clear? Now when numerators and denominators are different, जब numerator और denominator दोनों ही different है तब हम कैसे compare करेंगे? Let us see. You have learned it in earlier classes also. In class 4th also you have learned. In 6th also you have done. Like अब ऐसे में हम क्या करते हैं? These are unlike fractions. Denominator different है. So in this case what we do? We convert it into like fractions. Like fractions में convert करने के लिए हम क्या करेंगे? We will take LCM of denominators. So now here denominators are 5 and 8. So LCM of 5 and 8. 5 and 8 का LCM कितना हो जाएगा? 40. Right? So अब 3/5 को हम क्या लिख सकते हैं? हमें डिनोमिनेटर में क्या बनाना है? 40. यहाँ क्या था? 5. तो 5 की जगह 40 बनाने के लिए हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 8 से, बिकॉज 5 8 जा 40. अगर डिनोमिनेटर में हम 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो अगेन 3 into 8. अब 3 into 8 क्या बन गया? 24 and 5 into 8 40. तो 3/5 को हमने इस फॉर्म में लिख दिया. सेम वी विल डू विथ 7/8. 7/8 है. 8 की जगह हमें क्या बनाना है? एलसीएम, दैट इज 40. तो 8 के टेबल में 40 कब आएगा? 8 5 are 40. सो 8 इज मल्टीप्लाइड बाय 5. अब डिनोमिनेटर में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा. दैट इज 7 मल्टीप्लाइड बाय 5. 7 5 are 35 upon 8 5 are 40. राइट? अब दोनों फ्रैक्शंस क्या बन गए? लाइक फ्रैक्शंस. इसका डिनोमिनेटर भी 40 और इसका डिनोमिनेटर भी 40. आपको पता है कि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तब हम कैसे कंपेयर करते हैं? न्यूमरेटर चेक करते हैं, राइट? सो अब इसमें अगर हम देखें 24/40 एंड 35/40, तो कौन सा वाला फ्रैक्शन हमारा ग्रेटर है? ऑब्वियसली विच वन? दिस वन. न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा. तो यार न्यूमरेटर 35 इज ग्रेटर, 24 इज स्मॉलर, राइट? सो दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर. नाउ वी कैन राइट इट इन द ओरिजिनल फॉर्म. ये तो हमने फॉर्म चेंज करी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया मल्टीप्लाई करके. ओरिजिनली 24/40 कौन सा फ्रैक्शन था? This one 3/5 and 35/40 कौन सा फ्रैक्शन था? 7/8. So you can write it in the original form.
that 3 by 5 is smaller than 7 by 8. So this is how you compare the fraction when numerator and denominators both are different. Okay, now the next topic is lowest terms of fraction. Fraction की lowest term. So a fraction a upon b is said to be in lowest term or it is said to be irreducible if HCF of a and b is 1. Means जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का HCF 1 होगा यानी कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, then it is said to be irreducible or in its lowest term. See how there are two examples. First one is 30 upon 42. तो अगर आप देखो 30 और 42 दोनों डिविजिबल है किस नंबर से? 2 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है ना? सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या हो जाएगा? 6, सबसे बड़ा नंबर जिससे ये डिवाइड हो रहा है, राइट? तो हम इसको क्या करेंगे? इसकी HCF से डिवाइड कर देंगे बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो वी कैन राइट इट एज 30 divided by 6 upon 42 divided by 6. तो कितना हो जाएगा? 30 divided by 6 is 5 and 42 divided by 6 is 7. अब क्या ये और कैंसिल होगा? क्या 5 और 7 1 के अलावा कोई और नंबर है जिससे डिवाइड हो रहे हैं? नो. सो नाउ इट इज इन लोएस्ट टर्म. इसको हम लोएस्ट टर्म बोलते हैं कि अब इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है. HCF इज 1, राइट? सो दिस इज द लोएस्ट टर्म. सी द नेक्स्ट एग्जांपल 84 एंड 144. अब 84 और 144 का HCF क्या हो जाएगा? हाईएस्ट के क्या कॉमन फैक्टर होगा इनका? सो व्हेन यू विल फाइंड द फैक्टर्स यू विल सी दैट बोथ आर डिविजिबल बाय 12. So we can divide both numerator and denominator by 12. So 84 divided by 12, it is 7. And 144 divided by 12, it is 12. Okay. अब 7 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF कितना हो गया? 1. ये 1 के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं है, राइट? सो दिस इज द lowest term.